आज क्लास रे हम देखिबा केमती GitHub यूज करबा राइट। फर्स्ट तमे जब लॉगिन करिवो तमर GitHub अकाउंट को तमर डैशबोर्ड रे तमे जस्ट लैंड अब डैशबोर्ड ओपन ला तो डैशबोर्ड रे तमे चाहो तम रेपोजिटरी को जीवा पई कोन रेपोजिटरी अछि लेफ्ट हैंड साइड रे तमे टॉप रेपोजिटरीज कोन टॉप रेपोजिटरीज तमे व्यू करि परिबो। तमे दि चाहो तम रेपोजिटरी को जीवा पई तो प्रोफाइल ऊपर क्लिक करिवो इमेज ऊपर तमर यो रिपोजिटरी सेक्शन रे तम रिपोजिटरी डिटेल्स मिल जिवो। तो तम प्रोफाइल विषय देखियोर अछि योर प्रोफाइल क्लिक योर प्रोफाइल तो तमरो कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल्स भीतर आसी जिवो राइट। एटा तम कंप्लीट ओवरव्यू प्रोफाइल डिटेल्स ओवरव्यू आसी जिवो। एटा तम एड्रेस डिटेल्स तमरो कंप्लीट प्रोफेशनल डिटेल्स आ केते फॉलोअर्स कोन ए सब डिटेल्स तमरो पब्लिक रेपोजिटरी आसी जिवो। तो आसी गला परे तम एटी चेक करि परिबो जे मोर रेपोजिटरी केते 38 टा 38 रेपोजिटरीज I have created 38 repositories and maximum are there public repositories. So I have contributed for the public to use. So maximum are public repositories. So you can also view my account hela Ranjit for GitHub. जोटा कि मु ट्रेनिंग पर्पसेस रखी रंजित फॉर GitHub ए अकाउंट है मोर। तो जदि मु रेपोजिटरी क्लिक करी राइट तो रेपोजिटरी क्लिक करी कोन ना मु कंप्लीट रेपोजिटरी डिटेल्स ए सब डिटेल्स तमे व्यू कर परिबो जे एटा पब्लिक रेपोजिटरीज सब जाक पब्लिक देखो मु कोन करछि ना रेपोजिटरी क्रिएट करछि पब्लिक रे सब जाक पब्लिक सब प्रोजेक्ट सब राइट ए सब प्रोजेक्ट जोटा कि तुम पढेबा को जाउ किछिटा प्राइवेट अछि जोटा कि मोर निजर एप्लीकेशन जोरा मु बनै छि एटा प्राइवेट रखि छि तो सेटा कंपनी सब यूज कराउ छि आ बाकी सब मोर पब्लिक रहि छि राइट बाकी सब पब्लिक अछि। तो ठीक अछि तो फर्स्ट एठी हमें कोन करिया तमे फर्स्ट ओपन करिवो और रेपोजिटरी को जीवो। तो हाउ विल क्रिएट ए रेपोजिटरी इन द रिमोट GitHub remote repository right in GitHub remote how we can create a repository। तो कोन करे repository sections asle you can see here we have a new button here right new button click this new button। the new button asla mane create new repository that is to create new repository। so तमर जेति कि सब प्रोजेक्ट फाइल्स बा सोर्स कोड तमे चाहौ तमे सेव करी रखिबा पई बा स्टोर करिबा पई लाइक ट्रैक करिबा पई मैनेज करिबा पई तो तमे पर्टिकुलर रेपोजिटरी रे you can keep all your source codes all your project files everything in this repository okay। तो तमर जदि किछि टेम्पलेट यूज करिबा पई चाहौ तले से टेम्पलेट तमे यूज करि परिबो। तो मु टेम्पलेट किछि यूज करिबा को चाहूनी लेट इट बी देयर ओके। तो मु कोन कहछि ओनर तो कोन ओनर अछि मतलब रंजित फॉर GitHub तो रेपोजिटरी नेम आ गोटे रेपोजिटरी नेम ता सब यूनिक दबो आ एतिक मन रखि थाओ whatever repository you guys are going to give it should be the project standard right whatever project requirement based on the standard तमे गोटे रेपोजिटरी नेम दबो ना कि एमती मन इच्छा जहा पाइबो से दे दो ना। तो सब कंपनी रे गोटे पॉलिसी सब कंपनी गोटे स्टैंडर्ड थाए तो सही स्टैंडर्ड हिसाब रे you have to choose your repository name so you have to choose the repository name based on the standard set by your company okay। So suppose I want first what you have to do how we choose the repository name। Suppose we are working on a finance application suppose we are working for finance applications right so finance applications okay we are working for suppose finance applications finance application okay and finance applications कोड जाउची को एलओबी रे जाउची लाइन ऑफ बिजनेस को लाइन ऑफ बिजनेस एटा जाउची बैंकिंग सेक्टर रे बैंकिंग रे राइट बैंकिंग राइट एलओबी फाइनेंस रे जाउची फाइनेंस एलओबी बा बैंकिंग रे हमरे कुछ। तो मु चाहि गोटे एप्लीकेशन फाइनेंस एप्लीकेशन सो एप्लीकेशन ना सपोज अछि एक आप XYZ एप्लीकेशन ना तो मु कोन करियो ना फाइनेंस डिपार्टमेंट रे फर्स्ट एलओबी सपोज LOB suppose commercial banking okay it is suppose commercial banking or
or we can do what we can say, it is personal banking. Okay, so suppose either you can give the LOB or directly you can the department, finance department. So LOB, suppose I'll give as bank hyphen finance, then application name. So eta mu chahunchi mo repository name mu daba pai. I want to give this name as my repository name. So what I can do, I can just go ahead and create a repository name as bank hyphen finance, or banking, you can say banking hyphen finance hyphen app XYZ. Then what is it? Banking hyphen finance hyphen app XYZ. So it ala project na, department, LOB. Easily anyone can find this repository name in your project, in your organizations, with the name itself. Okay, so we can give a descriptions, always give a good descriptions for that. Okay, so I can just give like XYZ finance application, then right, तो तमे डिसाइड करिवो एटा पब्लिक यूज करिवो ना प्राइवेट यूज करिवो, ठीक अछि। तो जते कंपनी रे तमे यूज करिवो, कंपनी रे क्रिएट करिवो, कोनसी कंपनी पे तमे काम करछो, इट शुड बी ऑलवेज प्राइवेट। तो तमे प्राइवेट रे रखिवो एटा। अब एतिक मन रखि तो GitHub is an open source tool also, and it provides unlimited public and private repository creations for free. आगुरु कौन थिला ना, प्राइवेट किछिटा लिमिट थिला, अप टू 5 repositories प्राइवेट तमे क्रिएट कर परियो, बाकी तापर से पेमेंट करथला। एबे कोन करछि ना, अनलिमिटेड प्राइवेट, any number of private repositories you can also create, public repositories as well as private repositories. Okay, so suppose I first let me select as public, the public select करली, तो मुख्य तुमको देखे देबी केमती चेंज करि परिबो public to private. Okay, तो पब्लिक रेपोजिटरी, तो add readme फाइल। सो readme फाइल सबु प्राय जगह तुम देखते हो readme फाइल यूज करा हुए प्रोजेक्ट रे। तो readme फाइल रे काम कोन ना, तमे ए जो प्रोजेक्ट ता करूचो बा ए जो रेपोजिटरी क्रिएट करूचो, आर repository informations, repository विषय जानेबा पई, about the repository, about the application, about the project, everything you can keep it in the readme file. So whoever are going to use your project in your team, the team member, right, your organization's members, so they can read this readme file and can use your applications. Okay, so and then we have this add.gitignore. Okay, so .gitignore we have not yet read it, so तुमको git.gitignore विषय रे बते देबी जेतोले किछिटा मु हमें फर्स्ट गिटहब रे कवर करि सरे, तापर हमें .gitignore विषय रे डिस्कशन करिवा, एटा काहे की यूज करा होय, राइट। add a readme file, done. Then this will set master as the default branch. तो हमें कौन करले ना, हमें जतोले फर्स्ट लोकली हमें जतोले इनिशियलाइज करूतले, कोन हला git init ऐड करी इनिशियलाइज करले, तो कोन हला ना, से हमरो मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट को ब्रांच क्रिएट कला, बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच। तो मास्टर ब्रांच हम पई कोन हे जिवो, वर्तमान इनिशियल रेपोजिटरी, वर्तमान इनिशियल रेपोजिटरी बा इनिशियल ब्रांच, राइट। तो एठी भी सेमती हमें जतोले गिटे गिटहब रेपो क्रिएट करिवा गिटहब रे, तो एटा कोन होला, फर्स्ट गोटे मास्टर डिफॉल्ट ब्रांच क्रिएट कर, मास्टर बा मेन। तो तमे चाहू छ जदी मास्टर न रखी मेन रखिबा पई, तो तमे सेटिंग्स को जाई चेंज कर देबो, मास्टर जगह रे मेन बा ट्रंक बा जहां भी आरटीएल जहां भी लिखियो चाहू छ तमे लिखि परिबो। तो एठी मास्टर थाउ, राइट, मास्टर डिफॉल्ट ब्रांच। लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ रेपोजिटरी, डेट रेपोजिटरी, तो मु कोन पब्लिक रेपोजिटरी दे देली, सी तो मु गोटे रेपोजिटरी, I just created one repository. So this repository, what I am going to do, I am going to use this repository to store our project. To store our project, I am going to use this repository, right? So what is this? This is a banking finance applications, right, application, and here I'm going to create. Okay, now we got our
repo created. Okay, so once we get our repo created, you can see here we have some settings, we have code, issues, pull request, actions, projects, wiki, security, insights, settings, right? Fork, star, unwatch, ping, all these informations are there. I'll show you one by one once we move on. Okay, first let's go ahead and create a file. तो आमे जेतेबेले लोकली क्रिएट करथिले git यूज करिकि तो गोटे नॉर्मली गोटे फाइल क्रिएट करी से फाइल ऐड करिथिले तापर कोन कमांड यूज करथिले git add git commit राइट तो सब git add to track the files and then git commit the file सब यूज करथिले तो वर्तमान एबे कोन करिवा ना आमे एबे यूज करिवा कोन आमे बैंकिंग फाइनेंस एप्लीकेशंस रे वर्तमान गोटे फाइल किछि ऐड करिवि तो ऑलरेडी गोटे रीडमी फाइल अछि जोटा कि इनिशियली रीडमी फाइल ता हमें ऐड करथिले व्हाइल क्रिएटिंग द रिपोजिटरी तो फाइल ऐड करिया पई तमे केमति करिवो एठी देखो मास्टर गोटे ब्रांच कोन फर्स्ट ब्रांच कोन अछि मास्टर ब्रांच राइट तो मते गोटे ऐड फाइल क्लिक करो एठी ऐड फाइल क्रिएट न्यू फाइल और अपलोड फाइल जदि तमे किछि फाइल तमे क्रिएट ऑलरेडी करिचो चाहूचो अपलोड करिवा पई then you can go ahead and upload it right suppose you want a file upload karibi click on upload okay choose your file suppose mu particular a file ta upload kariya pai chahunchi mbLMS okay a particular file ta upload kariya pai chahunchi ya fir mb talent a file upload kariya pai chahunchi open then a file ta upload select hela then commit changes तो कमिट जेतेबेले चेंजेस करियो एटी कोन दउची तमे कमिट चेंजेस किछि इन्फॉर्मेशंस दउची कोन पई कोन चेंज करियो तार विषय रे लिखियो कोन ऐड कलो बोली तो सब बेले मने रखिताओ every time you are doing some changes you are adding some changes give a meaningful message so that any newcomers or anyone who else are working in your project can understand what changes you have done to the current project right so it is very useful it's very beneficial and very useful for your project okay so I can just quite go ahead and give like added one SQL DOM file something SQL DOM file would add kali commit changes so kon hala na se file ta kon hala dekho bartaman mbtalent.sql अपलोड हो गला तो मुझे कौन कली अपलोड कली राइट अपलोड कली तो गिटहब आम कौन जानी गिटहब गोटे रिमोट वेब बेस्ड टूल राइट इट्स ए क्लाउड वेब बेस्ड टूल एंड इट वर्क्स एज ए परफेक्ट कोड or perfect tool for a developer so developer can write their code here in the GitHub also so how we can do that we can simply add by clicking here add files and create new file तमे तो create new file कोन करिया ना गोटे कोड एडिटर हम बुझे दउची जोटा कि हमें कोड हमें लिखि परिबा राइट सपोज मु एठी गोटे कोड लिखिली राइट गोटे शेल स्क्रिप्ट लिखुची as universe right echo hello this class is for GitHub internet do this then छोटो सिंपल स्क्रिप्ट लिख देली मो हिसाब रे राइट तो demo.sh फाइल ना लिखि देली तो फाइल ना फर्स्ट तमे दबो राइट को फाइल ता तमे क्रिएट करूछ आ तमर कोड लिखिया कथा डेवलपर जेंति गोटे कोड लिखले तो से हिसाब रे तमे कोड लिखि देल राइट तो कोड लिखि साइला परे तमे जानिबो जे मु कोड लिखि साइलेन तो कोन करिवो कमिट करिवो चेंजेस को वेरी सिंपल तो सेठी तमे गिट रे को यूज करिया पे ले कोन यूज करतलो git commit -m किछि मेसेज दउतलो तो एठी भी सेमती हमें कोन कलो किछि लिखि सारिबा परे कोड चेंजेस जहा करिया कथा लिखिया कथा ऐड करिया कथा चेंज करिया कथा कमिट चेंजेस तो एठी गोटे किछि मेसेज दबो तो फर्स्ट हला कोन क्रिएट डेमो तापर किछि मेसेज दबो एसएल स्क्रिप्ट created for the demo SL script created for the demo right then commit directly to the master branch commit directly to the master branch
ହେଇଗଲା commit changes. Okay, commit changes. तो particularly branch एटा commit ହେଇଗଲା ତ demo.sh ମୁଁ କଣ କଲି commit ତ ଏଠି କଣ କଲି ଗୋଟେ ଫାଇଲ ମୁଁ upload କରିକି ତମକୁ show କରିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ କଣ ହେଲା create କରେଇଲି. I created one file and uploaded one file. So now this particular repository is having three files. One is readme file and all these things, right? So now if I click this particular repo, right, what you see here, a readme file looked like this. So এটা banking applications ମୁଁ ଯାହା definitions ଦେଇଦେଲି xyz ତମେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛ whatever you want to keep the informations about the repository, you can add everything in the readme file, so it will be displayed here in the below. Okay, so what happened here, we have just created a simple repository. Under this master we have created few files. Now तो आउ जणे डेवलपर चाहूची मल्टीपल डेवलपर चाहूछन काम करिया पे सेम ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो कौन करिवे ना तो मु कौन करिवे ना गोटे ब्रांच सपोज मु चाहूची गोटे ब्रांच मु मास्टर रे क्रिएट न करी मु चाहूची गोटे मोर निजर ब्रांच क्रिएट कर देई तो हाउ टू क्रिएट ए ब्रांच सो क्लिक हियर you can click here or else you can click in the branch itself. तो branch रे जतो तमे क्रिएट करिवो ना एठी कोन करिवो न्यू ब्रांच, राइट, न्यू ब्रांच तो ब्रांच ना दियो सपोज मु देली डेवलप रंजीत देखो छोटे ना दे देली डेवलप रंजीत तो कोटू सोर्स करिवो मास्टर रु हमर गोटी ही ब्रांच अछि मास्टर ब्रांच तो मास्टर रु सोर्स करिवो चेकआउट करिवो कोटू मास्टर रु क्रिएट न्यू ब्रांच कौन है डेवलप रंजीत क्रिएट है राइट. नेक्स्ट गो टू द रेपोजिटरी तो ये देख कौन देखला टू ब्रांचेस वी हैव टू ब्रांचेस ना मुझे ये ड्रॉप डाउन रे क्लिक करी तो हमर दुईटा ब्रांच देखाई देला बट बाय डिफॉल्ट कौन देखौछि मु मास्टर ब्रांच रे सिलेक्ट है कोडा मास्टर ब्रांच, राइट. तो इफ यू वांट टू सिलेक्ट डेवलप ब्रांच टू वर्क वी कैन सिलेक्ट इट हियर. So now we can see we are into develop Ranjit branch and here also we have three files because we checked out from master branch. So master branch is tinta thila file so it will tinta same tinta file three files are showing. Now let's do some modifications in the develop.ranjit, right. So demo.sh file तो ये मु कौन कर मॉडिफाई करी तो मॉडिफाई करने पे मु कौन कली फाइल ऊपर चेंज करी क्लिक करी राइट demo.sh क्लिक ऑन दिस demo.sh तो फाइल तो ओपन हैला तो एटी सब ऑप्शंस अछि तो कौन करबा पई तो एटा फर्स्ट लेट्स फर्स्ट बुझे दउची तो कोड हैला एटा कोन तमरो जो कोड टा अछि लिखिछ तो एटी गोटे ब्लेम ऑप्शन आसुची तो ब्लेम माने कोन तो धर हमें गोटे टीम रे पांच जण काम करूची प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग 5 मेंबर्स, राइट. सपोज one member has done written some code and another member did not like that code, the way he has written the code is not good. So other member what he can do, he can just simply click on the blame. That means he is blaming the person that whatever code is written is not good. So blaming is not good actually in a team. So if you blame, then it not good collaborations or rapport will be between you guys, right. You will get angry on him why he blamed all these things, right. So but still it has an options that you can still blame other people for their standard of code or any mistakes and any bug they have written, right. तो एटा गला तो नेक्स्ट आसुची रॉ फाइल डिटेल्स एटा रॉ फाइल हमें चेक करिवा पई एटा ला कॉपी करिवो कॉपी रॉ फाइल को कॉपी करिवा पई तमे करि परिवो. इफ यू वांट टू डाउनलोड this demo.sh तमे डाउनलोड करिया पई चाहू तम लोकल मशीन्स को क्लिक ऑन द डाउनलोड आइकन सो इट हम डाउनलोड हे जो तो ये फाइल को मु एडिट करिया पई चाहू पेंसिल बटन यू कैन सी हियर, राइट. सो वी कैन क्लिक ऑन दिस पेंसिल बटन एडिट तो एडिट ऑप्शन आसी गला तो मु एठी आ गोटे किछ लिखि पारि इको I mean this directory, okay, or this folder.
pwd. Okay, I'm in this directory or folder, whatever. तो फाइल किछटा चेंजेस कर देली, तो कमिट चेंजेस किछ मैसेज दे देली, न्यू लाइन added to know the folder location or to know the path. Follow meaningful message mu देदेली. Now commit changes to directly commit changes to the develop Ranjit branches. So develop Ranjit branches रे ना mu commit कर देली. तो वर्तमान एटी you can see here in this file I have 4 lines, right? I have 4 lines in this demo.sh file, where in this develop Ranjit branch. But if I go and check master branch, what do you see here? In master branch we have only 3 files. We have only 3 files, right? So how we can reflect this to the master branch? We can merge it, right? To merge it, what you have to do? You have to first raise a PR. First, you have to raise a PR, pull request, right? So click on the pull request and you can click new pull request. Okay, click on new pull request. So before merging, so what we used to do in Git directly, आमे कौन use करते Git merge and then branch ना तो इटा merge हे जाउतले directly. But GitHub रे कौन होची ना तमे जेतु इटा गोटे collaboration platform, right? तो तमे कौन करियो ना pull request गोटे raise करिवो. Pull request raise कला परे कौन हबो तो तमे को ब्रांच को ब्रांच सहित merge करिया को चाहूछ. तो एठी कौन अछि मास्टर ब्रांच मु चाहूछि डेवलप रंजित ब्रांच को कौन मास्टर ब्रांच सहित मर्ज करिवा पई मु चाहूछि. जो कोड एठी अछि से कोडटा मर्ज करिया पई. तो से कोन कहछि ना ऑटोमेटिकली चेक करछि whether it can be merged or not. Yes, able to merge. It कहछि yes, able to merge. Then what we can do? Yes, able to merge. Then we can go ahead and create pull request. So before doing that, what we can do? We can verify here the changes. Here you can see एटी कौन है ना 3टा मास्टर रे फाइल थिला आ गोटे प्लस ऐड हबो. जदि मैं मर्ज करिवा आगुर 3टा लाइन थिला एबे आ गोटे नुवा लाइन जोटा कि डेवलप रंजित ब्रांच रे अछि सेटा ऐड हबो कोथरे मास्टर रे, राइट? देन रिक्वेस्ट क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, द न्यू लाइन एडेड टू नॉन पाथ, डन. देन एटी कौन करिवो ना तमे रिव्यूअर चाहिले ऐड करिया पई तो रिव्यूअर ऐड करिवे. तो एटी कौन कहछ ना नो रिव्यूज के रिव्यू देना है. ओके, तो चाहे बदि तुम रिव्यूअर ऐड करिया पई तो तम गिटहब अकाउंट रे जो माने तम ऑर्गेनाइजेशन रे तम अकाउंट गिटहब ऑर्गेनाइजेशन में जो वन सब काम करतो गिटहब तम टीम मेंबर आइदर तम टीम लीडर और मैनेजर, if you want add to verify it, you can just type his name and add the account to review the code. So code review is very important, guys. So what will happen in the code review? The code review, someone has to review the code. Whatever code you have written is correct or not. Someone should review the code. Once the code is reviewed, they can approve it. Okay, they can approve it, and once approval is done, they can go ahead and create a pull request. So just create a pull request. So once it is created a pull request, what will happen? It will go to the reviewer. Whatever reviewer you have added, it will go to that reviewer, and that reviewer, what it will do? It will do the approval. What is this? Require approval from specific reviewers before merging. Add rules. So I have not set up any rules. तो आम मु किसी रूल ऐड करन दली बा रिव्यूअर ऐड करनी तो सेति पे मते एटी किसी शो करनी. बट नॉर्मली कंपनी माने का तुमको रिव्यूअर को ऐड करिया पड़िबो जे कि तुम कोड को रिव्यू करिवो. तो बिना रिव्यू रे, रिमेंबर, बिना रिव्यू कोड रिव्यू रे it's not advisable to merge your code to master. That someone should be there to review and approve your code before you merge that into the master. Got it? In that real time, you have to do like this. As we don't have a reviewer, we don't have an approver, we cannot do that.
So now what we can go ahead, and here this branch has no conflicts. तो ये branch में किसी conflict नहीं, तो हमें कौन करिवा merge pull request confirm merge. तो merge ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ merge ହେଲା develop रंजित branch ରୁ master branch को convert ହେଇଗଲା माने merge ହେଇଗला right. ମୁଁ ତ ଏବେ master branch create କରିବି माने click କରିବି, तो master branch click କରିକି ମୁଁ ଯଦି file को ଯିବି तो एठी कौन है बर्तन देख 4 लाइन्स आसीगला आगर 3टा लाइन थिला ए पर्यंत, तो बर्तमान मास्टर ब्रांच रे राइट मास्टर ब्रांच रे 4टा लाइन पड़े आस राइट. तो मुझे दे लिटिल बैक इफ आई गो टू लिटिल बैक, तो एठी कौन है ना मास्टर ब्रांच रे हमर ई सब फाइल अछि, ई फाइल टा में अपडेट होछि केते 5 मिनिट 5 मिनिट्स एगो इट वाज अपडेटेड. तो कौन अपडेट हे तमे चेक करबा कहले ई जो मिडिल रे नै अपडेट demo.sh राइट, ए मिडिल रे तमे क्लिक करलो क्लिक. तो एटी तार तमे तो डिफरेंस पाई परिबो कोन कोन डिफरेंस जेमते हमें यूज करथले कोन git diff लोकली, तो एटी तमे तार डिफरेंस पाई परिबो कोन कोन ऐड हेछि कोन चेंजेस हेछि. तो ये फाइल रे गोटे ऐड हेछि ए लाइन टा ऐड हेछि रिसेंटली देन, तो ए वेज रे तमे काम करि परिबो राइट. तो गला तो पुल रिक्वेस्ट विषय जानिबो पीआर विषय पीआर पुल रिक्वेस्ट काहे रेज कराबो गोटे ब्रांच आ गोटे ब्रांच को मर्ज करबा पई राइट. तो आमे ई पर्टिकुलर सेटिंग्स जो आमे अछि राइट, ए सेटिंग्स ता तो सेटिंग्स ता आमे जदी पर्टिकुलर रेपोजिटरी आहार सेटिंग हला एटा राइट क्लिक सेटिंग्स. तो आ भीतर आमे बहुत सारा इंफॉर्मेशंस पाइबा. तो तमे चाहौ कोलैबोरेटर जेतु एटा पब्लिक रेपोजिटरी अछि एनीवन कैन व्यू दिस रेपोजिटरी. इवन तमे भी चाहिए जदि रेपोजिटरी रंजित फॉर गिटहब को जीवो github.com/ranjit for github/banking-finance-app xyz तमे भी पर्टिकुलर व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स आर देयर तमे भी शो करि परिबो सब सी कर परिबो राइट. सब जाको फाइल तमे देखि परिबो राइट, यू कैन सी एवरीथिंग. तो एटी आमे जो सेटिंग्स को आसिले तो सेटिंग्स वी हैव सम एक्सेस लेवल्स. तो तमे चाहौ जदि एटा प्राइवेट अछि प्राइवेट तमे ऑब्वियसली तमे ऑर्गेनाइजेशन रे प्राइवेट करियो राइट, प्राइवेट रेपोजिटरी काम करियो. तो ये प्राइवेट रे तमे काहा को कोलैबोरेटर असाइन करिया चाहौ माने तमे ये प्रोजेक्ट के कोलैबोरेट करिवो बा के काम करिवो, तो तमे ई कोलैबोरेटर क्लिक कोलैबोरेटर. तो एटी कोलैबोरेटर इनवाइट करिवो को पीपल को तमे इनवाइट करिवो ऐड पीपल. तो फाइंड पीपल सपोज मु सतीश को इनवाइट करिया चाहौ तो सतीश कर जो हमर GitHub ID जेमति कि मोर GitHub ID है रंजित फॉर GitHub सेमति सतीश if Satish GitHub ID if I know then I can give Satish GitHub ID and select a collaborator. Then it will go on invitations to the Satish email ID and then Satish has to approve it. Then he will be added as an collaborator to collaborate to contribute to the project. Okay, collaborator. So moderate options you can add it, branches you can see the branches, tags, rules, and the GitHub actions is nothing but the CI/CD, GitHub CI/CD or GitHub actions. By using we can trigger GitHub deployment, Git deployment and Git integrations. We can do it, but that's we are not going to learn. We are going to learn the Jenkins one. Okay, webhook विषय भी हमें जानिबा जेतो Jenkins हमें पढ़िबा. तो कोड स्पेस यूज कराउची कोड स्पेस रे जतो हम डेवलपमेंट एरियाज काम करछु कोड स्पेस रे काम करे. तो बहुत सारा ऑप्शंस अछि हमें चेक करिबा. सेही परी जदि हमें चेक करिबा एठी जीवा पर्टिकुलर रेपोजिटरी नॉट रेपोजिटरी ता रेपोजिटरी सेटिंग्स हमें जानिले. तो हमें जतो कोड को जीवा कंप्लीट रेपोजिटरी कोड विषय जानले विकी माने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रो कोन कोन विकी कंप्लीट डिटेल्स जानिया पहले विकी की जीवो. तो किछि तमे क्रिएट फास्ट पेज तो हम किछि पेज क्रिएट कराइनी. तो मु ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऊपर गोटे पेज बनेइबा को चाहू. तो मु कोन करिबे गोटे गो आई कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट. तो ए सब डिटेल्स जानि परिबो. तो इनसाइट्स ए प्रोजेक्ट की कोन कंट्रीब्यूट करछ केतेटा मर्ज पुल रिक्वेस्ट आसीची केतेटा ट्रैफिक आसुची केते कमिट्स हेची कंप्लीट डिटेल्स तमे कोन इनसाइट्स रे जानि परिबो राइट. केतरा पुल रिक्वेस्ट ओपन अछि केतरा मर्ज हेची केतरा इश्यू क्लोज हेची नुवा इश्यू केतरा अछि की मेजर कंट्रीब्यूटर राइट सब किछि. तो सिक्योरिटी सेक्शंस रे तमे कंप्लीट पॉलिसी विषय रे एडवाइजर आ विषय टोटली कोड स्कैनिंग तो कोड कोन प्रॉब्लम अछि कि नाही कोड स्कैन करिबा पई तमे सिक्योरिटी सेक्शन रे करि पाइबो राइट. तो कोड्स विषय रे हमें जानिले कोड हमें कंप्लीट फाइल विषय रे हमें रेपोजिटरी जानि.
ओके तो ये पब्लिक रेपोजिटरी अच्छी तो चाहूच ये जब पब्लिक रेपोजिटरी को तुम माने रेपोजिटरी तुम गिटहब अकाउंट ये जो रेपोजिटरी रे तुम गिटहब अकाउंट रे ऐड करिया पे तो तुम कौन करबो ना ये फोर्क ऊपर क्लिक करिवो तो फोर्क ऊपर क्लिक कले कौन होबा तुम निज गिटहब अकाउंट रे ये पर्टिकुलर रेपोजिटरी टा ऐड हेची तो तुमको आउ मो अकाउंट को आसीबा को पड़िबनी तुम डायरेक्टली तुम अकाउंट रु ये रेपोजिटरी तुम एक्सेस करि परिबो जेहेतु एटा पब्लिक अछि राइट सेति पे फोर्क टू फोर्क इट ओके यू कैन यूज इट राइट तो मोस्टली हमें सब किछि जानि फाइले आ विषय बेसी किछि तो नाही बट तो हमें क्रिएट कले कोन ब्रांचेस क्रिएट कले नुवा ब्रांच कले फाइल अपलोड कले फाइल क्रिएट कले तो सब चेंजेस कले नाउ डिटेल सब जानले तो वर्तमान कोन हैला ना आमे लोकल रेपोजिटरी आ गिटहब रेपोजिटरी रे कनेक्टिविटी जानिबा आ केमति कोन काम करबा राइट तो सेति पे हमें कोन करबा ना फर्स्ट मु कोन करबी ना गिटहब लोकल जो हमर ए जोटा रिमोट रेपोजिटरी अछि मु चाहूची सेटा मो लोकल रे यूज करबा पे तो केमिति करबी तो फर्स्ट ए जो कोड अछि राइट कोड हियर तो क्लिक हियर इन द कोड तो क्लिक कले कोन अछि ना एठी https ssh github cli आ विषय दोची ssh गोटे जोटा की तमे यूज करि परिबो ssh की द्वारा ए पर्टिकुलर लिंक टा यूज करि परिबो github cli जदि github cli यूज करछु डायरेक्टली ये कमांड यूज करी github cli रे तमे ए पर्टिकुलर यूट्यूब यूज एक्सेस करि परिबो तो https मु यूज करिबा को जाउची https द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वे रे वी कैन आल्सो एक्सेस दिस वन तो कॉपी ए लिंक टा को मु कॉपी कली तो कॉपी करी के मु चाहूची डेस्कटॉप रे राइट मोर डेस्कटॉप रे मु गोटे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टा को क्लोन करबा पाई तो ता कमांड हैला कोन git clone and repository name so repository name कोन देली github.com ranjit for github account ना आ एटा हला repository name dot git repository name dot git जोटा कि मु वर्तमान एटू कॉपी करली एटू वर्तमान एटू कॉपी करली राइट xyz.git राइट एटू कॉपी पेन हम कॉपी कर देली कॉपी करी करी एटी git clone आउ रेपोजिटरी ना तो मतलब एंटर मारली तो कोन है ना ए पर्टिकुलर रिमोट रेपोजिटरी टा वर्तमान जोटा github.com रे अछि सेटा मो लोकल मशीन को मो लैपटॉप को मु क्लोन कर देली एटी ऑटोमेटिकली डाउनलोड सी तो जेहेतु एटा पब्लिक अछि एटा किछि यूजर आईडी पासवर्ड मागलेनी यदि प्राइवेट थांता देन it would be asking for user ID and password. So you should have provide the user ID and password. But now it's not asking anything. So we got our banking finance project cloned. तो मुझे यदि डेस्कटॉप को जीबी एठी सो एटा गोटे हमें टेलीकॉम मैनुअली क्रिएट करतले तो एठी गोटे फोल्डर क्रिएट हे जाइछि देखो बैंकिंग फाइनेंस xyz फोल्डर क्रिएट हे बैंकिंग फाइनेंस xyz राइट तो ये फोल्डर को मुझे देबे cd तो मु प्रोजेक्ट फोल्डर भीतर को आसली तो फोल्डर भीतर आसले माने कोन हला तो एटा होला हमर रेपोजिटरी टा तो रेपोजिटरी भीतर आसली तो फर्स्ट डिफॉल्ट कोन अछि मास्टर तो मु एटा क्लोन कर देली मो लोकल मशीन्स को लोकल मशीन क्लोन होला परे आई एम इनटू द मास्टर तो मु यदि नॉर्मली गिट ब्रांच मारिबी मास्टर देखौची राइट तो गिट ब्रांच हाइफन ए मारिया तो ऑल ब्रांचेस कौन ब्रांचेस सब अछि कंप्लीट सब देखौची ओरिजिनल तो मास्टर डेवलप रंजित ब्रांचेस आ गोटे मास्टर ब्रांचेस तो मेठी कोन अछि मास्टर ब्रांच अछि तो मु चाहूची कोन करबा पई डेवलप रंजित ब्रांच को जिया पई तो मु कोन करबी ना git कोन कमांड चेकआउट git checkout to develop Ranjit branch, right? Develop hyphen Ranjit. So branch switch to new branch. The origin develop Ranjit. So head है origin develop Ranjit. तो ये पे चेक है कोडी मु develop Ranjit branch रे अछि तो एटा git bash रे हमें काम कले हमें जानि परिबा हमें को ब्रांच रे काम करूचे बोल इजीली okay it will give you like this here
नाउ तो मु जो फाइल देखिबी सब lsipnl तो एई जो तीनटा पर्टिकुलर तीनटा फाइल आमे क्रिएट करथिले कोडी रिमोट रे राइट से रिमोट रे तीनटा को फाइल अछि तो मु एठी भी वर्तमान तीनटा फाइल पाई गली राइट तीनटा फाइल मते मिली गला तो मु इफ पर्टिकुलर डॉट sh जो प्रोजेक्ट टा मु क्लोन करछि मु चाहिए भी डॉट स्क्रिप्ट टा को डेमो डॉट sh स्क्रिप्ट टा को रन भी करि परिबी देखिया डेमो डॉट sh see hello this class is for GitHub today's date is एतिकी and I am in this folder a folder which तो हम स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हेगला तो हम कौन गली ये सब दिन सब कौन थिला डिटेल सब फाइल सब प्रोजेक्ट कोड थिला रिमोट रेपोजिटरी गिटहब रे थिला तो ताकू कौन कली मु ना लोकल मशीन्स को आनली राइट लोकल मशीन्स रे काम कली तो वर्तमान लोकल मशीन्स रे जहां वर्तमान गिटहब रेपो रिमोट रेपो रे थिला वर्तमान सेटा मु कौन कली क्लोन कर देली मोर लोकल रेपो राइट तो वर्तमान ये लोकल रेपो रे मु जदी कैट फाइल करछि तो ये पर्टिकुलर कमांड ये चारि लाइन रे कमांड अछि राइट लेट्स गो अहेड एंड राइट समथिंग हियर ai डेमो किछ गोटे सेल स्क्रिप्ट लिखिबा को चाहू छी ठीक राइट तो मैं एटी कोन कली लिखिबी तो echo enter your name enter your name okay read name okay so echo dollar name वेरी सिंपल राइट किछि चेंजेस कर देली कोडी लोकल जोटा कि मु क्लोन करथली रिमोट रे तो मु लोकली किछि चेंज कर देली हियर राइट तो लोकली चेंज कला माने कोन कमांड यूज करबा वर्तमान एटा कोन ऑन ट्रैक हे कि थिबो किछि फाइल मु खाली अपडेट करछि वर्किंग कॉपी एटा वर्तमान तो एटा को मु ट्रैक को नबा पई बस स्टेज एरिया को नबा पई ऑन स्टेज एरिया रे अछि वर्तमान मु ताको स्टेज एरिया नबा पई कोन करबी git add डॉट फाइल ऐड हे गला राइट तो ताकू मु कोन करबी कमिट करबी रेपोजिटरी लोकल रेपोजिटरी कमिट करबी कोन करबी git commit -m script modified किछि गोटे लिखि देली स्क्रिप्ट मॉडिफाइड डन बस चेंजेस हे गला राइट आई डिड सम चेंजेस तो मोदी वर्तमान git log देखिबी तो एठी कोन हैला बहुत सारा लॉग एठी देखौछ देखो फर्स्ट गिट लॉग रे असला कोन स्क्रिप्ट मॉडिफाई जोटा वर्तमान ऑथर रंजित स्वाई ऐड कला राइट रंजित स्वाई तो हेलो तो ऑथर अछि रंजित स्वाई अछि hello@रंजित स्वाई अछि राइट बट एठी हैला कोन जो से ता पूर्वरु जो जोटा जहां अपडेट हेछि एटा कोडी मु गिटहब रे डायरेक्ट अपडेट करितली राइट तो ए सब कमिट आईडी ऑथर देला भी रंजित स्वाई जोटा कि करछि बट ता ईमेल एड्रेस देला ए सब डिटेल्स रे देला राइट तो एटा ईमेल एड्रेस दोछि एटा जोटा कि मु लोकली वर्तमान अपडेट कली आ ए सब डिटेल्स ता कोन रिमोट रे अपडेट हेतला तो मु गिट लॉग्स रे मु चेक करि पाछ राइट हे गला तो सेटा हमें लॉग्स लिखि देले तो वर्तमान कोन हैला ना मु ए फाइल डेमो फाइल ता को कोन करले स्क्रिप्ट फाइल ता को मु लोकली मो मशीन रे मु अपडेट कर देली तो मु चाहू छी जो फाइल ता मु अपडेट कली लोकली तो एठी जदी मु चेक करबी रिफ्रेश करके चेक करबी तो ये फाइल टा कोन अपडेट हेतिबो ना नाही ना कहीं अपडेट हैनी कारण मु जहा चेंजेस कली कोठी लोकली करी छी एटा रिमोट रे किछि चेंजेस रिफ्लेक्ट हैनी तो एटा केमिति रिफ्लेक्ट हबो तो जेहेतु हमें कोलैबोरेटिवली वी आर गोइंग टू वर्क सो जो भी जहा भी वर्क थिबो एठी मते करिवार अछि तो मु बर्तन से काम सब कर साला परे कोन करबो ताको रिमोट को पुश कर देबी तो रिमोट को पुश हे गला परे तटी कोन करबो आउ गोटे जो डेवलपर थिबो राइट तो आउ गोटे जो डेवलपर थिबो तो से डेवलपर कोन करबो ना धर सपोज मोर कोड ए रिमोट रिपोजिटरी रे कोड अछि राइट तो मु फर्स्ट कोन कली जेतोले गोटे काम कली तो फर्स्ट मु कोन कली से रिपोजिटरी रु कोड को
क्लोन कर देली राइट एटा पुल कली बा क्लोन करला पर मोर कोड किसी चेंजेस कली किसी काम कली तापर वंस आई फिनिश्ड माय वर्क व्हाट आई कैन डू आई कैन push that code to the remote repository suppose it is a remote repository remote repo remote repo रे ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା local repo git ଏଠି git install ହେଇଛି okay now what we are going to done now ଯେତେବେଳେ push ହେଇଗଲା ତ push code push ହେଇଗଲା ପରେ ନୂଆ code ସବୁ changes ଏଇଠି ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି developer କାମ କରୁଛି ସେ କଣ କରିବ ନା ସେଇ code କୁ pull କରିଦବ first pull the code so whatever changes done by this guy suppose developer 1 it will be available in the remote machines right and same code now developer 2 will pull it now this code will be reflected here now let me show you how we can do so first ମୁଁ କିଛି changes कर ଦେଇଛି କୋଡି लोकल ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ रिमोट रे अपडेट करिया ପାଇଁ ତ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି ମତେ push କରିବାର ଅଛି କୋଉଠି କି रिमोट repo राइट तो यूज करबी git push origin आउ कोडा को ब्रांच को डेवलप रंजीत ब्रांच को पुश करियर अछि डेवलप हाइफन रंजीत it entered okay so what it says fatal error unable to access obvious thing कारण एठी कोन दोछि ना से कोन कोछि ना मार्लिन ब्लू टेक को स्ने जाइछ access denied so what happened why it is access denied because marlin blue tech ta वर्तमान सेट कराइछि मो लोकल एनवायरनमेंट रे आ गोटे अकाउंट तो सेठी मो अकाउंट को आउथरे सेट कला परे जाइके एटा काम करिवो राइट सेठी पे फाटल एरर देला तो मु चाहूछि ए जो वर्तमान चेंजेस हमें करिछे राइट तो ताकू मु जदी रिफ्लेक्ट करिया पई चाहूछु सेम लेट मी रेप्लिकेट इन ए डिफरेंट मशीन तो मते आउ गोटे लोकल मशीन से काम करछि आ गोटे रिमोट मशीन से तो एठी हमर गिट अछि राइट let me clone it first git clone so without pushing it if I clone this one what will happen जोटा कि पुरुना जो कोड थिबो सेही कोड ही मु क्लोन करिवि राइट क्लोन then let's cd banking only तो मु मास्टर ब्रांच अछि let's check git branch hyphen a तो मास्टर ब्रांच रे मु अछि बर्तन तो डेवलप रंजीत ब्रांच को जिबी git checkout develop रंजीत ब्रांच ओके चेकआउट हे गला डेवलप रंजीत ब्रांच तो एठी जो फाइल सब अछि cat जदी demo.sh मु करूची तो पुराना फाइल जहा अछि बट नुवा स्क्रिप्ट मु कोड लिखि छी अलगा डेवलपर जने लिखि ता मशीन रे बट सेटा पुश कला पर जाइकरी ये डेवलपर पाइबो राइट तो what he has to do he has to push the code by changing the account okay मु अकाउंट चेंज करबो को जाउनी बिकॉज़ अकाउंट चेंज करले फोन तरे मते कोनी मालिन ब्लू टेक अकाउंट को आनिबार अछि तो मु सेही अकाउंट ता कोन करछ ना एठी ऐड कर दोछि ए मशीन रे ठीक अछि तो मु अकाउंट करिया पे फर्स्ट लेट्स गिट सम चेंजेस मु एटा मैन्युअली कर दोछि किछि चेंजेस vi ये जो कोड लिखितले ता कॉपी कर दोछि sorry okay here now let's save it okay so ए जो ब्रांच मु अपडेट करि देली तो मु चाहूची ए जो कोड अपडेट हेची तो वर्तमान मु कहबली कोड किछि चेंजेस मु कली तो git add dot then git commit hyphen m so script modified something
ओके गिट कमिट कर देली तो कमिट कर सारा पर मु कोन चाहूची ना मु चाहूची कोड को पुश करिया पे कोड की रिमोट रिपोजिटरी की राइट रिमोट रिपोजिटरी तो कोन करबी गिट पुश origin the develop hyphen ranjit ए ब्रांच टा मते कोन पुश करिया अछि एटा एंटर तो एठी कोन करछि ना से यूजर नेम मागुछि तो यूजर नेम मोर कोन अछि ranjit for github ranjit for github enter the password first time तमे सेट करिया पड़िबो राइट तो पासवर्ड मागुछि तो हाउ वी कैन जनरेट दिस पासवर्ड लेट मी शो यू तो ताकू कहंती हमरो pat token generation pat token generation so what is this pat token it's called pat token generation it's called pat p a t our full formula personal access token personal access token पार्ट तो ये पर्सनल एक्सेस टोकन बर्तमान हमें जनरेट करबा तो एटा केयरफुली देखो केमती जनरेट करबो मैक्सिमम टाइम यू हैव टू जनरेट द पासवर्ड बा पर्सनल टोकन इन ऑर्डर टू एक्सेस योर GitHub अकाउंट ओके तो मु आईडी दे देली कोन रंजित फॉर GitHub जो मो अकाउंट एठी मते पासवर्ड दवार अछि तो पासवर्ड पाई मते कोन पैट टोकन जनरेट करियार अछि राइट हाउ टू जनरेट गो टू योर GitHub अकाउंट एठी सेटिंग्स को जीवो एठी not a setting ku no right not this settings you have to go to your profile sections here under this you can find one settings here right go to settings a settings complete profile settings tame paigalo complete details right पूरा down left hand side ro nav bar re left hand side ro side bar re tame asibo ethi developer settings paibo right click on developer settings then personal access token by pat right click on this and token classic click on classic the other one is the beta version don't go with beta version go with classic and एटी कोन देखि परियो तमे दुईटा टिकट टोकन ऑलरेडी क्रिएटेड अछि बट दिस टोकन गोटे टोकन ऑलरेडी एक्सपायर हे छै गोटे टोकन एक्सपायर हेनी तार एक्सपायरेशन डेट सेट करा हेनी ओके आ गोटे ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑन अगस्त 6th तो मु गोटे नुवा टोकन क्रिएट करबी कोन करबी जनरेट न्यू क्लासिक टोकन ओके टोकन नाम दे दियो सपोज डेमो b12 गोटे नाम दे देली एक्सपायरेशन डेट 30 days 7 days और जहाँ भी तुम हिसाब रे तुम रिक्वायरमेंट हिसाब रे तुम चूज करिवो केते डेट दबो सर सपोज मु 7 days देली आफ्टर 7 days द टोकन विल गेट एक्सपायर पासवर्ड एक्सपायर हे जो राइट तापरे तमर जो रेपो एक्सेस करिवो तार स्कोप कोन तमे दबा को चाहछो से हिसाब रे तमे स्कोप सब पार्ट 8 साइड रे दे कोन स्कोप पई तो मदि रेपो सिलेक्ट कली फुल कंट्रोल ऑफ प्राइवेट रिपोजिटरीज एंड पब्लिक रिपोजिटरी सब जाक मते मिल जिवो एठी तो ए हिसाब रे सब जाक तमे गोटे 1 by 1 पढी करी तमर जहां भी दरकार जो हिसाब रे तमर रिक्वायरमेंट दरकार पैट टोकन रो सिलेक्ट करी करी जिवो देन क्लिक ऑन जनरेट टोकन okay so token we created the account and we generate the token so we can see here we have this token created so a token ta tame kon karibo na save kari ki rakhithibo gote jagare otherwise kon hochi na a token use na karibo जदि न करिवो सेव कोन होछ ना तमे यदि एई पेज रु आउट ही जाउछो त ए टोकन तमे लूज करबो आ पाइबोनी तमे आउ थरे रीजनरेट करिया पड़े तो गोटे जगह सेव करथियो जोडा हैंडी बोल जगह जने केही तुमको ए टोकन काकू मिलिबो तम केवल तमे यूज करिवो राइट तुम पाइले टोकन पाइला पर तो एठी आसिकरी तो हमें जो अकाउंट यूज करथले एठी टोकन टा पेस्ट कर देली सी टोकन पेस्ट हे गला पर इमीडिएटली कोन हैला ना कनेक्ट हे की कौन है ना ये पर्टिकुलर जहां भी चेंजेस मु एटी कली पुश सही गला कोडी की रिमोट रिपोजिटरी तो वर्तमान मु जदी रिमोट रिपोजिटरी की जीबी राइट वर्तमान मु रिमोट रिपोजिटरी की जीबी तो बैंकिंग फाइनेंस एप्लीकेशंस एटा ही हमर रिपोजिटरी राइट अपडेटेड नाउ जस्ट नाउ अपडेट हैला तो मु एटी demo.sh मारिबी
तो एठी किछि नाही कोन पई मु तो सेपटे किछि अपडेट कली बट एठी किछि देखोनी तो एठी कोन हमें मास्टर ब्रांच रे अछि सेति पई किछि देखोनी जदी मु चेंज कर देबी डेवलपर कोटा मु पुश करछि को ब्रांच मु डेवलपर रंजीत ब्रांच पुश करछि राइट आई हैव पुश्ड द डेवलप रंजीत ब्रांच नाउ व्हाट आई कैन डू इफ आई गो दिस तमे यदि कोन डिफरेंस चाहि देखिबा को चाहू छ क्लिक ऑन दिस एंड सी यही सब लाइन कोन हला ना बॉडी प्लस कराई ऐड कराई राइट कंप्लीट डिटेल्स पाई गलो तापरे ए फाइल चेक करियो ददी सी ए लाइन ता मते हमें सब ऐड करितले राइट तो एटी कोन कली मु कोड चेंजेस करके ताको पुश कर देली कोडी demo.sh को ऑल माय कोड्स आर पुश्ड नाउ तो दिस वे जहां भी चेंजेस कोन करिवार अछि त हमें टोटल चेंजेस ऐड कर देले तो ओके तो मु कोन करिवना बटीवन वर्तमान कोन करछि ए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जोटा मु एठी रन करते देखे रन कर देखिबा एम ओके तो एठी एग्जीक्यूटेबल परमिशंस नाही तो मते फर्स्ट chmod 766 766 demo okay enter your name Ranjit so my name is Ranjit okay fine so eta locally तो मु हमें कोन कले लोकली चेंज कले ताको पुश कले कोडी की रिमोट को वर्तमान हमें रिमोट चेंज करिबा आ लोकली ताको केमती रिफ्लेक्ट करिबा सेटा देखिबा ठीक अछि तो मु रिमोट चाहूची एथरे किछि ओटे चेंज करिबा पई पर्टिकुलर फाइल रे लेट्स गो अहेड मु चाहूची देखो enter your page okay देखो ओके मु किछि छोटो चेंजेस गोटे एठी कर देल स्क्रिप्ट रे कमिट चेंजेस तो मु स्क्रिप्ट किछि चेंजेस कर देली तो एठी चेंजेस हला पर मुदे लोकली एठी देखिबी लोकली आसिकरी तो मो फाइल कोन चेंजेस हे नथिबो किछि राइट कारण एटा लोकल रे अछि किछि नाही जोटा पुराना थिला सेटा अछि तो एठी जे कोनसी चेंजेस रिमोटली जदी तमरो कोनसी डेवलपर माने करिसेंदी तो तमे कोन करबा ना you have to pull that code to your local machines to your local first okay you have to pull that code so how you will do that you can use git pull okay git pull simply use git pull so first before git pull हमें कोड अच्छे देखि दबा git branch तो हमें अच्छे develop ranjit branch है so git pull okay so before so कौन क्वेश्चन your local changes to the following files would be overwritten the following files जो local changes रे किछि अछि जो demo.sh रे overwrite हे जिवो तो local changes तो हमें किछि करी नै तो कौन करबा तो जदी भी करिचे तो मु डेमो मु कौन करछि git stash मार दोछि git stash माने git stash command हैला तो तमे कोनोसी काम जदी करिचे लोकली आउ तमे चाहूचो इमीडिएटली यदि आउ किछि काम आसी गला इफ यू गॉट अनदर वर्क टू डू so what you can do whatever changes you have done instead of deleting that you can stash it माने you can save the work तमे जो वर्किंग डायरेक्टरी रे वर्किंग कॉपी रे जो काम करिछ ताको सेव करि दबो गेट स्टैश सेव हे गला तो सेव हे गला पर नेक्स्ट तमे कोन करबो जहा चेंजेस करिया कथा कर देलो तापर नेक्स्ट तमे चाहूछ कोनी से काम जो पुराना काम सेव करछ काम करिया पय देन यू कैन गेट इट बैक स्टैश पॉप एंड यू कैन वर्क इट ओके तो बर्तमान गिट स्टैश कर देली तो सेटा को मु कोन करछ ना रिमोट रे जहा अछि मेटा को पुल करूछ ओके तो केमति करबी गिट पुल सो कहला गिट पुल एग्री पयसला गिट पुल गेला राइट तो बर्तमान कहला जहा भी सब
रिमोट रे चेंजेस व्हाटएवर चेंजेस डन बाय एनी अदर डेवलपर तो मु कौन करना मो लोकल मशीन को सब पुल कर देली राइट तो मो लोकल मशीन रे मु जदी एबे कैट डेमो करिवि देखो जहाँ सब चेंजेस रिमोट रे थिला तो मो लोकल मशीन्स रे जहाँ रिमोट मशीन रे थिला मो लोकल मशीन मा रिमोट रेपो रे थिला मो लोकल रेपो को सब मान ले राइट नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन तो आरो मोड okay oops it's not printing it here it's not printing it here okay what could be the problem so okay तो स्क्रिप्ट रे एटा प्रिंट करूनी कोन प्रॉब्लम थिबो तम भितर के जणे मते आइडेंटिफाई करी कहबो वर्तमान ठीक अछि तो वर्तमान हम कोन कली एंटर ना कली ना एंटर कला बेट प्रिंट कला बट एटी मु एज 70 प्रिंट कली बट एटी आई एम 70 इयर्स ओल्ड लिखिया कथा बट ए जगह रे किछि प्रिंट करूनी तो कोन पई प्रिंट करूनी लेट्स सी द कोड तो एटी कोन प्रॉब्लम अछि can anybody tell what's the problem just see the script anyone 70 टा रीड हाँ रीड रे 70 आड कौन करबी मुगले रीड रे 70 टा आड ओके तो एटी कौन ना मु एको प्रिंट कली कौन डॉलर एज तो एज हैला गोटे वेरिएबल बट एई वेरिएबल टा मु कोडी एटी डिफाइंड करिनी रीड रे खाली रीड मारिची इनपुट नेइची बट इनपुट टा स्टोर करिबी कोते गोटे वेरिएबल ले से वेरिएबल नाटा कोन एज एटी एज मु लेखिनी एटी वेरिएबल ना कोन देइची नेम से वेरिएबल टा को एटी कॉल कली एटी जोटा स्टोर हैला नाटा एटी डिस्प्ले कला बट एटी मु तो एज डिक्लेयर करि देली माने कॉल करि देली बट ताकू डिफाइन करिनी तो एटी कोन करबी मु रीड फॉर एज लिखी गोटे वेरिएबल देबी रीड एज ओके देन से एज टाको मेटी कॉल करछि राइट सेव इट राइट तो मु सेव कला परे लेट्स रन इट सी आई एम 70 इयर्स ओल्ड परफेक्ट काम कला बट एठी मु किछि चेंजेस कली से चेंजेस कोन एठी रिफ्लेक्ट करि नथिबो राइट रिफ्रेश टी रिफ्रेश करने का पुराना कोड अछि राइट रीड पर एज नाही तो मु कोन करी बेठी जो चेंजेस कली git add तापर git commit happen m I will dog fixed something commit है गेला राइट I added one changes तो commit है गेला पर मु कोन करी पुश कर देबी git push origin develop Ranjit ओके यूजर नेम और पासवर्ड हमें ऐड कर देथिले भलो हितांदा छाड़ो ऐड करिनी नेक्स्ट क्लास में बते देबी केमते ऐड करियो रंजित फॉर गिटहब ओके तापर टोकन दबो एटा थरे ऐड कर देला नेक्स्ट टाइम तुमको टोकन से मांगीबनी राइट तो टोकन बस कोन हला कोड हमरो पुश हे गेला ची कोड ता हमर जहा चेंजेस करतले कोड की रिमोट रेपो को पुश हे गेला तो मु वर्तमान रिमोट रेपो जाई के अछि रीड अछि तो मु रिफ्रेश कर देबीला सी वर्तमान एज आसी गेला तो वर्तमान केम देखला
मु जहाँ भी काम कली लोकली चेंजेस जहाँ भी कली ताको रिमोट रे पोस्ट कर रखिदेली तो एई हिसाब रे तमे रिमोट रे सब जाक काम सब जाक फाइल आउ रिपोजिटरी जहाँ भी तमे डॉक्यूमेंट करछो तो गिटहब रे स्टोर करके तमे रखि परिबो आ तो मोबाइल रे जेतेबेले दरकार तम डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट को तमे एक्सेस करी पढ़ी परिबो रीड करी परिबो तो सेति पई मु तमु सब बेले एडवाइस कोची गाइस बा गाइड कोची बा कहूची कि जेतेबेले तमे किछि डॉक्यूमेंट बनाउछो मेक इट डिजिटल वे रे किसी डॉक्यूमेंट बनाओ से डॉक्यूमेंट को स्टोर करी रख गिटहब रे कि कोनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जेमति कि गूगल ड्राइव अछि तमे गूगल ड्राइव रे स्टोर कर रखलो तो सेटा जेमति कि कोन पई इजी हबो ना तमे जे कोनसी जगह रे तुमको ठीक रेफरेंस दरकार है कि कोन जगह तमे बोर होउछो बसिछो इंस्टाग्राम देखि देखि बोर हो गलेनी नॉर्मली इंस्टाग्राम देखले तुम बोर हबनी आउरी बेसी उत्साहित हबो बट जदि भी बाय चांस बोर हे गल इंस्टाग्राम रु किबा फेसबुक रु तो तमे इजीली तमे कोन तम डॉक्यूमेंट्स ओपन करिक जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स बनैछ पाठ रिलेटेड स्टडी रिलेटेड राइट वर्क रिलेटेड तो ताको तमे व्यू करि परिबो आइदर तमे गूगल ड्राइव रे रखि पारो बा तमर निजर गिटहब अकाउंट रे रखि पारो तो मोर जेमति मोबाइल रे गिटहब अकाउंट इंस्टॉल अछि तो मु कोन जेतल जहाँ भी प्रोजेक्ट रिलेटेड किसी इन्फॉर्मेशन दरकार मो मोबाइल रे मु चेक करि परिबी कोड भी लिखि परिबी सब किछि करि परिबी तम स्पेयर टाइम रे जदि बसिकिर बोर होतबो के तो बसिकिर कोड भी तमे लिखि परिबो भी काम भी करि परिबो राइट सो डू प्रैक्टिस गाइस आज पे एतिक थाउ नेक्स्ट क्लास रे ऑर्गेनाइजेशन विषय रे जानिबा बाकी अलगा सेटिंग्स विषय रे जानिबा अलगा टिके काम देखिबा ता विषय केमति कोन काम करछे मर्जिंग विषय रे जानिले पुल रिक्वेस्ट विषय रे जानिले कॉन्फ्लिक्ट केमति कोन हैला पर कॉन्फ्लिक्ट केमति फिक्स करबा ता विषय रे हमें नेक्स्ट क्लास रे जानिबा तो नेक्स्ट क्लास रे हमें प्राय गिटहब कंप्लीटली करके कंप्लीट गिटहब हमें सारी दबा नेक्स्ट वीक रे ठीक अछि तो वर्तमान जहाँ भी पढ़ले बहुत किछि पढ़िले गिटहब रु तो इसको सब प्रैक्टिस करके मते स्क्रीनशॉट एनी हाउ by tomorrow morning you have to send me the screenshots okay I'll upload this video after this class okay guys that's all see you then bye bye okay chalo guys